the class poem, new poem. You can say a completely new poem that is in your 100% syllabus. Money madness. Money madness. Pile madness कहले कौन? Madness कहले पागलामी exactly. Madness कहले madness stand for पागलामी. So madness कहले insanity, you can say insanity और पागलामी. Money madness. तो मोटा मोटी भावे कहले टंका पाई पागलामी. That can be called टंका पाई पागलामी. And it's written by D.H. Lawrence. The writer is D.H. Lawrence. David Herbert Richard Lawrence. The full name of the author. David Herbert Richard Lawrence was born in the year 1885. 1885 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା. He was died in the year 1930. 1930 ମସିହାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ. And is an English novelist, ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଔପନ୍ୟାସିକ, English novelist, then poet, କବି, playwright, ନାଟ୍ୟ ଲେଖକ, then essayist, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, literary critic, ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ, literary critic, and a painter, ଜଣେ ଚିତ୍ରକର. So these are the definition of a particular poet. You can look at how multi-talented he was. केते multi-talent तांको पाखरे थिला. कौन कौन थिले से एकाधार रे? He was an English novelist, so he belongs to England first of all. Second thing, he was a poet, से जने कवि. Third thing, he was a playwright, ड्रामा लेखक. Essayist, प्राबंधिक. Then literary critic and painter, and also a painter. So his collected works represent an extended reflection upon the dehumanizing effects of modernity. His collected works, तांकर जो संग्रह, कविता संकलन तमे कहि पारो कि कविता संग्रह कहि पारो, लेखार संग्रह बा समाहार भी कहि पारो तमे, represent an extended reflection upon the dehumanizing effects of modernity. Modernity कहले आधुनिकता. तो आधुनिक मनुष्यर मानविकता धीरे धीरे जो क्षुर्ण हो जाउछि, the deteriorateness of humanism in human, or you can say of humanity, how it is depleting day by day. About that particular thing he has written in his writings. So effects of modernity and industrialization शिल्पकरण जहाँ कुआ जाउछि. In them, Lawrence confronts issues relating to emotional health and vitality, spontaneity and instinct. Look at the words that are being used there. So Lawrence confronts samna ku adichanti. He has confronted what issues relating to emotional health, bhava pravanata jaha kahiba, emotional health. Then vitality tar gurutva, spontaneity स्वतः स्फूर्त भाव रे बाहरुवा भावना, एंड इंस्टिंक्ट प्रवृत्ति, मनुष्यर प्रवृत्ति, मनुष्य को भलिया जीवन यापन करुछि, मनुष्यर प्रवृत्ति कौन, मनुष्य भितर व्हाट आर द इंस्टिंक्ट दैट्स आर इनसाइड ह्यूमन बीइंग्स. ही tried in his writing to focus all those things, whatever things are mentioned there. So, craze for money seems to have gripped the modern world. Introduction, warm-up section. आज बोधे introduction भीतर आमे रही जिबा. So, craze for money seems to have gripped the modern world. Craze for money. टंका पाई मनुष्य भीतर जो craze, मनुष्य भीतर जो भावना, feelings, जो attraction, आकर्षण रही छी, seems to have gripped कहले कब्जा. ग्रिप्ड कहले कोन कब्जा. ग्रिप्ड द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक समाज, आधुनिक पृथ्वी को टंका अर्थ पिपासु मनुष्य निज कब्जार रखिछि. अर्थ पिपासा मनुष्य मानंकु निज कब्जार रखिछि. द मॉडर्न वर्ल्ड, इन टुडेज वर्ल्ड, आजिकाली का जुग रे, इन टुडेज वर्ल्ड पीपल नीड मनी टू हैव एक्सेस टू थिंग्स. People need money
लोक मानक टंकार आवश्यकता रही कौन पाई टू हैव एक्सेस थिंग्स कौन सी गोटे जिनस पाइबापी कौन सी गोटे जिनस को निज कब्जार रखापी कौन सी गोटे जिनस को करायत करने पीपल नीड मनी लोक मानक अर्थर आवश्यकता रही सो विदाउट मनी दे आर रियली लॉस्ट एंड डोंट नो व्हाट टू डू without money a people or a man without money is not considered not being given prestige not being considered as a rebel person in the society समाज ताकू अवहेलित चक्षुरे देखे जदि जा पाखे पैसा ना if you have no money then you will be treated nowhere you will not get vital respect in the society whatever celebration may be whatever function may be you will not be considered as guests there because you don't have money कारण तुम पाखे पैसा ना अर्थ ना सो अर्थहीन मनीष दुनिया रे किए पचारती ना तार अर्थ हूँ जहाँ पाखे अर्थ ना अर्थ कहले टंका जहाँ पाखे टंका ना ताको किए पचारती ना nobody ask him so money they may end up on the streets so without money they may end up in the street without money बिना पैसा जहाँ पाखे पैसा ना दे मे एंड अप इन द स्ट्रीट गली गली रे ताकू बुलिबा पई पड़े गली गली रे ताकू बुलिबा पई पड़े स्ट्रीट भिकारी आमे बेगार कहि परिबा तांको nobody ask them about their health nobody ask them about their food habits nobody ask them about their status nobody ask them nobody even greet them as a human being कौन सी लोक से लोक को भल व्यवहार प्रदर्शन करते ना कौन सी लोक से सम्मान प्रदर्शन करते ना तुम शुणी थी समाज सब तोर औकात केते नहीं ए शब्दटा व्यवहार हुए पिले औकात कथा जदि आसे समस्त औकात जस्ट एंड ऑफ एट द ग्रेवयार्ड्स समाधिस्थ समस्त औकात whatever it may be whoever it may be the richest person in the world it may be the beggar the lowest condition having the beggar having lowest condition his destination ultimate destination you can say is graveyard समस्तंकर औकात केते दूर श्मशान पर्यंत ताठो अधिका दूर किए भी किछि नहीं कि जाई परिबा नहीं so why this proud why this ego why this anger whatever you have getting me so without money they may end up on the street the rich are dhani loko mane the rich are therefore admired for their wealth and prosperity and the poor are hated for their poverty and adversity so that's why in our society what happens the rich are जो माने धनी व्यक्ति therefore admired they are being praised for no reason without reason they are being praised बिना कारण रे सेमानंकु सम्मान मिले काहाकू धनी लोक मानंकु बिना कारण रे सेमानंकु सम्मान मिले रास्ता रे देखिले समस्त नमस्कार करंती काहे ताकू नमस्कार करंती निबे काहाकू नमस्कार करंती ता पाखरे जो संपत्ति अछि ता पाखरे जो प्रॉपर्टी अछि ताकू समस्त नमस्कार करंती ता पाखरे जो रुबाब आमे जो कहि परिबा अछि ताकू समस्त नमस्कार करंती सो वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कहले प्राचुर्यता एफ्लुएंटनेस प्राचुर्यता एंड द पुअर आर हेटेड एंड इन कंपैरिजन टू दोज रिच पीपल द पुअर मीन्स द पीपल हैविंग नो मनी जा पाखरे पैसा नहीं द पीपल हैविंग नो मनी द पुअर आर हेटेड सेमानंकु घृणार सम्मुखीन हवा पई पड़े सेमानंकु कोनोसी लोक भल पामती नहीं दे आर बीइंग हेटेड सेमानंकु घृणा करा जाय सो हेटेड फॉर देयर पॉवर्टी एंड एडवर्सिटी कहले प्रतिकूल परिस्थिति कोनोसी लोक केबे चाहे नहीं गरीब ही बंचिवा पाए नोबडी वांट्स टू बी वांट्स टू लिव इन पुअर कंडीशन yes or no everybody wants to be rich but this is the circumstances that makes the difference this is the labor of a particular person that makes the difference that's why it's written that you are the maker of your own destiny तमे जदि चाहिबो तम भाग्यर निर्माण निजे करि परिबा but still समस्तंक भाग्यर से धनी हबार सुविधा मिले नहीं समस्ते राताराति धनी हेई पारंते नहीं किछि लोक स्ट्रगल करंते दे आर स्ट्रगलिंग देयर सेल्फ टू गेट रिच still luck is not in favor of them
So it is not their fault somebody got burned where in the beggar's house. Is it his mistake? ଜଣେ ଲୋକ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ସମାଜର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାର ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ସେ କ'ଣ ଭଲ ହୋଟେଲରେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ତାର କ'ଣ ସେ ରାଇଟ୍ସ ନାହିଁ ଅଧିକାର ନାହିଁ ବଟ୍ in our society, in today's world, such type of things are happening exactly. So, but money has been the root, if not of all evil. But remember one thing, you are the next generation, so you must remember these things. So, what is it exactly? Money has been the root, if not of all evil. Money is the root of all evil. प्रत्येक खराब काम प्रत्येक खराब उद्देश्यर मूल होची टंका प्रत्येक जोठी झगड़ा हुए प्रत्येक माने डायरेक्टली परोक्ष भाव रे किबा प्रत्यक्ष भाव रे से रूट तार मूल थिबो कोन द रीजन इज मनी हाण काट चोरी जहा भी होची व्हाटएवर इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी एंड व्हाटएवर स्टेट ऑफ कंडीशन वी आर लिविंग and whatever things are happening in front of us, that is only for money. This class is only for money, you can say. You are watching this video only for money, that you can get a good job after qualifying your plus 2 examination or etc. Everything, whatever, if you will take it, whether directly or indirectly, it has a relation with the money. टंका सहित परोक्ष किंबा प्रत्यक्ष भाव में प्रत्येक मनुष्यर प्रत्येक कर्तव्य प्रत्येक काम जड़ित थाए. So, if not all evil, of great misery to the human race, and money is not only the evil, it is the great misery. Misery कहले कौन पिले निंदा, misery कहले घृणा, misery कहले दुर्दशा. So सबु दुर्दशार मूल कारण मध्य अर्थ जने लोक गरीब बोली ताकू चिंता करा जाए गरीब बोली धरी निया जाए कहीं ता पाखरे अर्थर अभाव रही जने लोक को धनी कहा जाए जने लोक सम्मान मिले कहीं ता पाखरे अर्थ रही जने लोक पाखरे अर्थ नहीं से तो से गरीब बोली कंसीडर करा जाए. यस ना. सो मनी टर्न्स मैन इनसेन. मनी टर्न्स कहले परिवर्तन कर दिए चेंज कर दिए. टर्न्स कहले चेंज. मनी टर्न्स मैन इनटू इनसेन. मनीष को पागल कर दिए. इनसेन कहले पागल आमी. सो पैसा मनीष को पागल कर दिए. पैसा पाई मनीष पागल आमी करी बसे. टर्न्स मैन इनसेन. सो लेट्स रीड द पोएम. चलो ए कविताटा पढ़िबा. Note how the poet pleads for a society without money. How the poet pleads कहले अनुरोध करिबा request करिबा. How the poet pleads money without society, for money without society. So for a society without money, बिना टंकार गोटे समाज विषय कवि किभली वर्णना करचंती किभली अनुरोध करचंती जे बिना पैसा रे लोक को बंचिवा को दियो. लोक को बंचिवार अधिकार दियो. जा पाखे पैसा नहीं ताकू भी बंचिवा पई तार स्वाधिकार अछि तार अधिकार अछि ताकू भी बंचिवा को दियो. ए विषय कवि कोन कहिसंती से विषय आज हमें पढ़िबा ए क्लास रे मनी मैडनेस. So may I request all the students whoever are there to share the video maximum in their friend groups. That's why other students can be there in the class. So money is our madness, our vast collective madness, and of course, if the multitude is mad, the individual carries his own grain of insanity around with him. I doubt if any man living hands out a pound out note without a pang and real tremor if he hands out a 10-pound note. We quarrel, money makes us quarrel. Let me read the text, thereafter I will start. So we quarrel, money makes us quarrel, it has got us down, we grovel before it and strange terror, and no wonder, for money has a fearful, cruel power among men. But it is not money we are so terrified of, it is the collective money madness of mankind. For mankind says with one voice, how much is he worth? Has he no money, then let him eat dirt and go cold. If I have no money, they will give me a little bread so I do not die. But they will make me eat dirt with it. I shall have to eat dirt. I shall have to eat dirt if I have no money. It is that I am frightened of. It is that I am frightened of, and that fear can become a delirium. That fear can become a delirium. It is fear of my money, mad fellow men. We must have some money. We must have some money to save us from eating dirt.
We must have some money to save us from eating that, and this is all wrong. And this is all wrong. Bread should be free. What should be free? Bread should be free. Shelter should be free. Fire should be free. Look at this stanza. Bread should be free. Shelter should be free. Fire should be free to all and anybody. To all and anybody. All and anybody. All over the world. All over the world. We must regain our sanity. We must regain our sanity about money before we start killing one another about it. It's one thing or the other. It's one thing or the other. That's all. এইটা হচ্ছে কবিতা পেলে কবিতাটা ଥିଲା ফুল কবিতা বর্তমান পড়িবা ଆଉ 5 minutes ଅଛି 5 minutes ଗୋଟେ stanza ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଗୋଟେ stanza କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବାକି ତକ କାଲି ସାରିବା ଓକେ ସୋ ମନି ଇଜ ଆୱାର ମ୍ୟାଡନେସ୍ what's written there money is our madness ପଇସା କ'ଣ what is money exactly money is our madness money ପଇସା କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପଇସା ହେଉଛି ଆମର ଆମେ ପଇସା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ଆମେ ପଇସା ପାଇଁ ପାଗଳ ପଇସା ହେଉଛି ଆମର ପାଗଳାମୀ ବିକଜ ଆଇ ହେଭ୍ ମନି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଏମ୍ ମେଡ୍ ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋର ଗୁରୁଜନ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ମୋ ବାପା ମୋ ମା ମୋ ପରିଜନ ମୋ ପରିବାର ମୋ ପୁଅ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ବିକଜ ଅଫ୍ ମନି only. So money is our madness, our vast collective madness. And it is not only my madness, it is not only your madness, it is our vast collective madness. ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ତମେ ପାଗଳ ମୁଁ ପାଗଳ ସିଏ ପାଗଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଗଳ ଫର୍ ମନି only ପଇସା ପାଇଁ it is our vast collective madness and of course ହଁ ନିଶ୍ଚିତ certainly and of course if the multitude is made here multitude stand for the human race all humanity all human beings they exist in the world multitude stand for the all human being exist in the world if the multitude is made if each and every person in the world is made whoever I am who am I the individual प्रत्येक व्यक्ति विशेष the individual carries his own grain of insanity around with him कौन करती the individual प्रत्येक व्यक्ति the individual carries धरिकी बुलुचंती कौन the grain of insanity own grain of insanity grain कहले शस्य पिले तो insanity कहले पागलामी रो मंजी कहले टंका you can say the seed of insanity or the grain of we are carrying the grain of insanity and we are moving we are wandering here and there with grain of insanity पागलामी रो मंजी धरिकी हमें समस्त बुलुचे around with him I doubt मते संदेह लगे कवि एठी निजर दुख प्रकाश करछंती कोन कहउछंती I doubt मते संदेह लगे any man living बंची थिबा कोनोसी एक मनीष any man living hands out बढ़ई दिए कौन hands out a pound note without a pang pang कहले पेन जंत्रणा pang कहले कौन जंत्रणा पेन गोटे पाउंड नोट जिते बड़े जड़े लोक क्या फोकोड़ रे दे दिए महालिया दे दिए से भितर सिहरण खेली उठे जंत्रणा गोटे अजणा भय सिहर अजणा माने हरई देवार गोटे इच्छा ता भीतर जाग्रत हुए हरई देवार गोटे भय ता भीतर माने जंत्रणा जात हुए जो मोर पैसा हसीगला मो पैसा पड़गला कौटी पैसा पड़गला मोर पैसा हसीगला देखे मो टंका पड़ला देखे मो 2 टंका पड़ला देखे मो 5 टंका पड़ला गेटिंग मी So I doubt if any man living hands out a pound note without pang. मते संदेह लागे एभली कोनोसी मनुष्य पृथ्वी रे नथिबो जार जेतल गोटे पाउंड नोट हजि जाए ताकू जंत्रणा हुए नाही से खोजे नाही जे पैसा को गोटे पाउंड नोट रो कथा एठी उठला सेकंड सेंटेंस देखिबा लास्ट सेंटेंस एंड a real tremor कहले फियर डर a real tremor आंदोलन सृष्टि हुए केते बेले a real tremor if he hands out a 10 pound note टिके आगु पड़ुते 1 pound note रो कथा वर्तमान असले 10 pound note जते बले 10 pound note तमरो जस्ट 10 टका हजिस बेले गाड़ी रे जाउचो कॉलेज जाउचो 10 टका हजि गला हमर जळखिया खाइबा पे 10 टका रखिथिलो केते तमे ओरिड हे जाओ जते बले तमर 100 टका हजि जाय थिंक अबाउट बापा देई जंदी 100 टका बोजा सौदा आनिबु तम 100 टका पॉकेट रे थिला 100 टका पड़ी जाइछ थिंक अबाउट इट Just think about it. Just imagine once. What should be the condition? Condition कौन होगा तुम्हारा?
सो एंड रियल ट्रेमर माने प्रकृत भय जना पड़े से प्रकृत भावनाटा उद्भासित हुए से जिते इफ ए हैंड्स आउट ए 10 पाउंड नोट जिते से 10 पाउंड रोटे नोट अन्य जन को बिना कारण रे दे दिए सेतेबेले मनरे कोठी ना कोठी ग्लानि अनुभव हुए अरे 10 पाउंड देदेली मोर गोटे कम आई था हैं मोर 10 पाउंड नोट आहा केते कष्ट रोजगार करते 10 पाउंड केते कष्ट बापा मत देते से पैसाटा नष्ट होगा हाँ देदेली मुझे अरे न देते कौन होता सो दिस टाइप ऑफ फीलिंग you know spontaneously created, spontaneously exist, spontaneously come out from our heart, from ourself, from our emotion. Getting me? So this is the poem. This is the first stanza. 1 2 3 4 5 stanzas are there. आसंता काली बाकी तक 5टा स्टांजा पढ़ा आज टे लेट हो गला एक्चुअली किसी काम करुँगी आई हैड सम वर्क एट होम तो आसंता काली 7:30 पिला कहवा पे जॉइन करने होप आम समस्ते इंग्लीश निश्चित भाव भल करवा विल डू बेटर ओके स्टे ट्यून मास्टर इंग्लीश बाय बाय।